12th, climate conditions. Supply of commodity is influenced by natural conditions. Natural conditions से supply influence होती है. यदि फेवरेबल हुई नेचुरल कंडीशन तो फॉर एग्जाम्पल मॉनसून है तो ज्यादा फसल, अच्छी फसल मिल जाएगी, और यदि सूखा पड़ गया तो क्या होगा, अपने आप ही फसल कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी. सो फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, मॉनसून, more supply of agriculture goods. If adverse climate condition, that is drought, less supply of agriculture goods. Point number 13, time period. Time period क्या है? In short time period supply is inelastic. बहुत छोटे टाइम में मैं मेरी सप्लाई चेंज कैसे करूं तो वो inelastic है, that is चेंज नहीं होती. In long time period adjustments are possible and supply becomes elastic. लंबे समय में तो क्या होता है कि मैं एडजस्टमेंट करके अपनी सप्लाई कम ज्यादा कर सकती हूँ. देन इट इज इलास्टिक. मीन्स इलास्टिक मीन्स व्हाट? इट चेंजेस. इनइलास्टिक मीन्स व्हाट? इट डजंट चेंज. सो इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज inelastic, but in long period adjustments are possible and supply becomes elastic. So finished with the question of what are the factors affecting market supply, and it was a very important question for your exam.